Hello everyone, this is Ikshita. Welcome to DIPSA'S Academy. चलो वीडियो रे देखिया कोन हमरा टीचिंग एप्टीट्यूड्स आउ तार रिलेटेड कोन कोन कंटेंट्स अछि आउ तार रिलेटेड क्वेश्चंस कोन पॉसिबिलिटी अछि आसीबार एग्जाम रे तो चलंतु स्टार्ट कर दो वीडियो टी तो फास्ट हो जे हमर कोन ना कांसेप्ट ऑफ टीचिंग तो हमर जो वर्ड अथला टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट हमें बुझिबा जो टीचिंग एप्टीट्यूड माने हमर एठी कोन बुझाए फर्स्ट हला टीचिंग माने हो जे हमर कोन ना टीचिंग काहाको दिया ना जने टीच किए भी जणा दबो ना जने एक्सपीरियंस्ड पर्सन आउ जने हमर कोन ना इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को दबो तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हमर एटी किए ना जने स्टूडेंट तो एक्सपीरियंस्ड हो जने टीचर जे हमर इंस्ट्रक्शंस देबे आउ इनएक्सपीरियंस्ड हो जने किए ना हमर स्टूडेंट जे रिसीवर जे रिसीव करिवे ठीक अछि टू वे कम्युनिकेशन वे ठीक अछि तो कोन हला टीचर टीच जे सी होचन जने एक्सपीरियंस्ड पर्सन जे कि हमर जने इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को जे तांकर इंस्ट्रक्ट बा तांकर जहां भी गेन नॉलेज अछि जोडन को से प्रोवाइड करिवे ठीक अछि तो एप्टीट्यूड माने को होची हमर एप्टीट्यूड माने होची कोना जने पढेबो तार को स्टाइल्स रहबो केमति गेस्चर्स रहबो को वे रे रहबो तो सेटा होची हमर गोटा एप्टीट्यूड तो एटी देखिबा हमर कोना कांसेप्ट ऑफ टीचिंग ठीक अछि so teaching माने होची हमर कोना बेसिकली the word teaching that which is basically derived from the word that is to teach which means to construct sorry to instruct तो to teach माने होची हमर कोना to instruct तो instruction दवा को हम बेसिकली हमें teach कहबा ठीक अछि तापरे होची करना it means a process in which one individual gain knowledge or learn something from a more knowledgeable person तो गोटे लोग केतोळे माने नॉलेजेबल हमें कंसीडर करे ना जेतोळे तार मास्टरी थिबो से सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट रे ठीक अछि तो टीचर जे से ऑब्वियसली मास्टरी ही थिबो ता सब्जेक्ट रिलेटेड को पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नै की पर्टिकुलर मैटर को नै की तार मोर एक्सपीरियंस थिबो दैट्स व्हाई कि से गोटे स्टूडेंट जे कि इनएक्सपीरियंस थिबो जे अननोन थिबो से सब्जेक्ट रिलेटेड ताको किछि नॉलेज प्रोवाइड करियो तार किछि एक्सपीरियंस ताको प्रोवाइड करियाबो कोन कहबा ना हमें that is a way of teaching. It means a process in which one individual gain knowledge or learn something from a more knowledgeable person. ठीक अछि teaching is a skillful applications or knowledge experience scientific principles with an objective to set environment to facilitate the learning जेमती हमें कहले कि एप्टीट्यूड रह गोटे पर्टिकुलर गोटे स्टाइल्स रहबो वे ऑफ टॉकिंग रहबो गेस्चर्स रहबो पोस्चर्स रहबो कि वेरियस इनोवेटिव आइडियाज रहबो जोटा कि कोन डेलीवर करियो कोन ना हमरो गोटे अननोन पर्सन को बा अननोन स्टूडेंट्स मानन को सबन को कोन डेलीवर करा हबो एज ए लेक्चर मेथड हो कि स्टूडेंट सेंट्रिक हो लर्नर सेंट्रिक हो गोटे इफेक्टिव लर्निंग केमथि हे पारियो से वे रे सेटा को बेस करछि आउ बेसिकली गोटे टीचर काम भला करना दैट कि to fill the gap माने कोन ना जहां भी गोटे गैप थिबो लर्निंग रो माने गोटे पिला लाइक सपोज बुझी पनथो इच्छो सब्जेक्ट ताको केमति से को रिमेडियल टीचिंग देले केमति से बुझी पारे को वेरी बुझी सेडा हो जो गोटे टीचर ड्यूटीज रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी आल्सो ठीक अछि नेक्स्ट देखिया कोन ना टीचिंग एप्टीट्यूड ता होची कोन ना इज अ पार्ट ऑफ जेमति कहली कि जोड़ा गोटे पार्ट ऑफ टीचिंग जो टीचर ट्राइज टू मोल्ड shape and develop the behavior of the students according to the needs cultures and thoughts of the society so societal thoughts आउ केमती से निजोगु बिहेवियरल चेंजेस एपर एज अ परमानेंट बेसिक मैनर रे आउ कोन हमरो तारो कोन हमरो बिहेवियर शेपिंग हे परिबो एटीट्यूड केमती डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी थिंकिंग केमती डेवलप परसेप्चुअल एबिलिटीज केमती डेवलप हो ता ऊपर आल्सो बहुत इंपोर्टेंस दिया जाय तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली एठी हमर कोन देखा गला two words teaching and aptitude which refers to the quality of a teacher by virtue of which he teaches his students in the other words various teaching aids हमर जो एमती यूज हला teachings methodologies how teaching activities which are necessary for teaching and collectively called teaching aptitude तो सबु को मिसे के हम ताको कहबा ना teaching aptitude बोली हमें कहबा दाको ठीक अछि
तापरे कौन हला ना it is a part of teaching in which studies are above on the relationship of teacher and student in a conducive हाँ एटा भी प्राय questions आसते exam रे तो learning ता हमर कोण केमती चले ना गोटे conducive as well as हमर controlled environment रे एटा carry out करे ठीक अछि तो बेसिकली मैं बुझी गली टीचिंग कोण एप्टीट्यूड कोण तो मोर ओवरऑली हमर कोण बुझेला टीचिंग एप्टीट्यूड हमें काहा को रिप्रेजेंट करूछि आ हमर को वे रे जणे डेलीवर करि पायो तार लेक्चर्स को कि तार जहाँ भी गेन्ड एक्सपीरियंस अच्छी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो प्रेजेंट हो जहाँ भी जोड़ो केन हेल्पफुल हबो ताको भी माने लाइक से सब्जेक्ट रे किछि आइडियाज गेन करियागु किछि तार स्टाइल्स और वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस करे एटीट्यूड्स एंड सोसाइटल रोल्स किछि रेस्पोंसिबिलिटीज एंड सिविक ड्यूटीज किछि जिंस जोड़े तार लाइक परमानेंट चेंजेस एज अ बिहेवियर हे परियो ओडा ना हमरा कंड्यूसिव और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बेसिस रे केमति चेंजेस हबो से ऊपर एटा बहुत फोकस करे ठीक अछि नेक्स्ट वीडियो देखिया चलो that is the nature first होची हमर कोन नेचर तो जेमते हम कहले जेटा कोन ना टीचिंग होची पर्पसफुल एक्टिविटी कि छोटे पर्पस रोथियो कोन पर्पस रोची ना बेसिकली गोल ओरिएंटेड एटा रोइबो माने टू अचीव समथिंग सम गोल कहार डिजायर चेंजेस केमती ना main purpose of teaching is to bring about the desired changes in students behavior changes habo knowledge changes habo skills रे attitude रे changes आसीबो ठीक अछि तो सेकेंडरी जिनसोडा होची कोन इट इज अ आर्ट एंड ए साइंस बेसिकली एज एन आर्ट आमे काहे रिप्रेजेंट करिया ना किछि गोटे हमरो कम्युनिकेशन हला क्रिएटिविटी हला मोटिवेशन हला ह्यूमन इंटरेक्शन ने केमति चेंजेस आसीबो सेमती एज अ साइंस केमति चेंजेस आसीबो ना सिस्टमैटिक मेथड्स रहबो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रहबो पेडागोजिकल थ्योरीज रहबो ता से हमरो केमति क्रिएटिविटी थिंकिंग आसीबो ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଟିଚିଂ ଟାକୁ ଡେଲିଭର କରିପାରିବା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି ଆମର କଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝାଏ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା इट इज अ डायनामिक प्रोसेस मान होची कोन एटा स्टैटिक नुहे डायनामिक माने कोन ऑलवेज चेंजिंग कंटीन्यूअस मैनर एटा चलिबो ठीक अछि तो कहला ना इट कीप्स चेंजिंग माने इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माने आरो कंटिन्यूटी टा थ्रू आउट द लाइफ कैरी आउट करियो ठीक अछि फर्स्ट होच हमर कोन ना लर्नर्स नीड्स एजुकेशनल गोल्स रहबो टेक्नोलॉजीज रहबो एंड सोशल वैल्यूज को इंक्लूड कला ठीक अछि दिस थिंग एज ए प्रोफेशन ठीक अछि प्रोफेशन माने होच हमर कोन ना गोटे स्पेशल ट्रेनिंग गोटा दिया जाय दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन ठीक अछि तो गोटे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहबो और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया हबो पर्टिकुलर कोर्सेस लागि ଯେମିତି ଆମର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟିଚିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଲାଇକ୍ ଆମର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହୁଛି ଆମର ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ବୁଝା ଆମର କଣ ନା କି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ମୋର ସ୍କିଲଫୁଲ କରାଯିବ ଆହୁରି କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର ହେଇପାରିବ ସେଇ ଉପରେ ଆମର କେମିତି ମାନେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ବହୁତ ଫୋକସ କରିଛି training ethics and commitment and like doctors or engineers teachers must continually upgrade the skills and follow the professional standards ठीक अछि तापर गोटे अछि कोन ना जेमति गोटे डायनामिक प्रोसेस सेमति एटा भी गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा कोन हमर कैरी आउट थ्रू आउट द लाइफ चलिबो का भितरे ना बोथ टीचर और लर्नर भितरे चलिबो ठीक अछि टीचर जे टीच दबो जने एक्सपीरियंस पर्सन थ लर्नर जे गेन करिवो नॉलेज फ्रॉम द टीचर्स ठीक अछि एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हला तो कैरेक्टरिस्टिक्स रे कोन कोन रहबो हमर बेसिकली ना दे चलो देखियो कैरेक्टरिस्टिक्स रे कोन कोन आसुची ना ए गुड टीचर मस्ट नो द लर्नर्स एज नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड इमोशंस गोटे भले टीचर के परिबो ना जे गोटे लर्नर रा नीड को बुझी परियो लाइक आ जनकर इंटरेस्ट एबिलिटी आ इमोशंस को जे बुझी परिबो दैट ही और शी कंसीडर्ड एज अ गुड टीचर not only a good teacher but also a very good teacher okay and को फील्ड में ताको डिफिकल्टीज फेस होची ताको सेई मोमेंट रे कोना रिमेडियल टीचिंग दिया हबो कि हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशंस सेटा को हमें बेसिकली फोकस करछन तो जण ओवरकम करी देले दापे इजी हे जो कि एमती कले ए वे रे लाइक हमें इजीली हम सॉल्व हेबरे किछि क्वेश्चंस तो सेटा से बेसिकली फोकस करछन देन
Teaching aptitude requires the clarity in expressions. Clarity ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ expression ରେ ବି ଆସୁ ବହୁତ verbally ଦରକାର ଅଛି ଆଉ non verbally and ability to simplify କଣ ନା simplify କରିପାରିବ ନା complex idea ଯାହା ବି ମନେକର complex ଜିନିଷକୁ simplify କରିପାରିବ in a simpler form ରେ ଠିକ ଅଛି to make understandable deep conceptual understanding ରହିବ ଆଉ ତାର ଯୋଉ subject ଉପରେ more knowledge ଥିବ like mastery on subject ରହିବା ଦରକାର ମାଷ୍ଟରୀ ଅନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟରୀଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ମେଥଡ ମାଷ୍ଟରୀ ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡେଭଲପ ନ୍ୟୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହାଇପର ଡିଡକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ରାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଲଜିକ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏସବୁ ଆଉ କଣ Very good teacher must have a mastery of learning ଯେମିତି କହିଲେ କି ତାର ମାଷ୍ଟରୀ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ୱେରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ କି ଯେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଆଉ କେମିତି ୱେରେ କଲେ କି ମୋର ଇଜିୟର ହେଇପାରିବ କି ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର୍ସ ଠିକ ଅଛି leadership qualities and have a ability to detect the gap of learner ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁଥିବ କି ତାକୁ ଇଜିୟର କରିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କ ପାଥ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଟାକୁ ସେମାନେ ସିମ୍ପଲର ୱେରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେଟାକୁ ୱେରେ ସେ ବେସିକାଲି ଫୋକସ କରେ ଆଉ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ ଅଫ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଫେୟାରସ୍ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓବିୟସଲି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହିଁ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଏଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ and instructional objectives should be specific ରହିବା ଦରକାର ଆଉ outcome based ରହିବା ଦରକାର and measurable in nature ହେବା ଦରକାର it describes an intended result of instructions rather than the process of instructions there are two types classifying both instruction that is the blooms first that is the blooms ଆଉ ଜଣେ ଅଛି gagness theories ତ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲୁମଙ୍କର ହିଁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି ଆମର ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବସ ଫୋକସ କରି ଦେଖିବା तो ब्लूम समेट देखिए लेट अस डिस्कस बोथ द क्लासिफिकेशन इन डिटेल तो फर्स्ट होचे हमर कोन ना ब्लूम्स बीएस ब्लूम देथिले एटा टी जानिया दरकार एटा देथिले हमर केने एंडरसन एंड क्राथल एग्जैक्टली नाटा हां तो फर्स्ट होला हमर कोन 1956 टू 2001 वेरी कला ठीक अछि नॉलेज टा हमर रिमेंबर हैला कंप्रेशन टा हमर हाँ एटा हमर होची कॉग्निटिव तीनटा से डोमेन कले फर्स्ट होची हमर कोन ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव माने होची हमर कोन ना मेंटल एबिलिटीज कोडा बुझेबो कॉग्निटिविटी होची हमर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जोडा दैट इज नोन एज अ कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल फैक्ट रिलेटेड जोडा रहला हमर दैट इज नोन एज अ कॉग्निटिव क्राइटेरिया सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कोन बेस करछ हमर नॉलेज compression, application, analysis, synthesis, and evaluations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2001 ରେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଡରସନ କ୍ରାଥଲ ତାକୁ ମଡିଫାଇ କରି କଣ କଲେ ନା ରିମେମ୍बर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालिसिस इभालुएट क्रिएट ठीक अछि तो हमें देखियो नेक्स्ट रे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे देखिबा कोन कोन एठी मेंशन अछि फर्स्ट होची हमर कोन नॉलेज माने होची कोन रिमेंबरिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज गोटे फैक्ट रहला हमर ताको केमते हमें मने रखिया गोटे कांसेप्ट को सेति पेंडा बहुत हमर हेल्पफुल हेता ठीक अछि नेक्स्ट होची हमर कोन कंप्रेशन माने होची कोन हमर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को रहया दरकार खाली तो गोटे लोग पिला लाइक गोटे मैथ्स देबो 2 + 2 = 4 गोटे नर्सरी कि सॉरी गोटे यूकेजी कि एलकेजी कि 1 क्लास पिला हो तो से केमते सॉल्व करियो गोटे से अंडरस्टैंडिंग रखले ना तो सॉल्व करे खाली रट्टा मार देले हो जिवो कि ना मेमोराइज कर देले तो बुझियो बने कांसेप्ट तो बेसिकली कौन रहा दरकार ना से फर्स्ट कौन कहले ना हमर नॉलेज रहा दरकार पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे रिमेंबरिंग रे केमती फर्स्ट जानिए जे जिंसटा कोन अछि फैक्ट कोन टर्म्स कोन और तार बेसिक कांसेप्ट कोन एडिशन रे केमती होचे सब्सट्रैक्शन केमती होचे मल्टीप्लिकेशन केमती होचे सब जिंसरा फर्स्ट
बुझिबा जे एक्जाक्टली जिनसटा कौन माने केमती हुए एडिशन हुए केमती सब्सट्रैक्शन हुए बाय थ्रू वेरियस एग्जांपल्स हम बुझिबा देन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे जिनसरे like information means explain the ideas in one's word own words रे application माने होच केना ताकू तापरे बुझिबा जे application में practically वे रे बुझिबा जे केमती हमें न्यू सिचुएशन देगी प्रॉब्लम टा केमती हमें सॉल्व करि परिबा ठीक अछि एनालिसिस माने होच हमर कोन ना दैट इज द एनालिस ब्रेकिंग द जहाँ भी इनफॉरमेशन होला सॉरी एनालिसिस रे कोन आसीबा हमर कोन ब्रेकिंग द इनफॉरमेशन को ब्रेक करा हबो जहाँ भी एनालिसिस माने दैट इज अ ब्रेकिंग द इनफॉरमेशन इनटू द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड रीजनिंग सिंथेसिस माने होच हमर कोन कंबाइन कर हाइगला पार्ट को फॉर समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल इवैल्यूएशन माने तो जजमेंट क्राइटेरिया आसीगला कि केमती स्टैंडर्ड्स एविडेंस तार जहाँ भी रिजल्ट ताको केमती इवैल्यूएट कर हबो ठीक अछि नेक्स्ट देखिए अफेक्टिव मूवमेंट हमर कोन इमोशंस को रिलेटेड करू गोटे हला हमर मेंटल अफेक्टिव ता होछ हमर कोन इमोशन रिलेटेड ठीक अछि अफेक्टिव हमर इमोशन रिलेटेड ठीक अछि तथ्य हमर कोन आछि फर्स्ट रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ए पांचोटी जिंस आसुचे हला तो रिसीविंग माने होछ हमर कोन that is affective passively paying attention and being aware of informations ठीक अछि तो सेकंड टा होछ हमर कोन रेस्पोंडिंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग हमें एक्टिवली केमती पार्टिसिपेट करबा आउ ता इन्फॉर्मेशन को हमें केमती रिएक्शन दवा वैल्यूइंग माने होछ कोन जहां भी हमें रेस्पोंड देले फर्स्ट रिसीव कोले रेस्पोंड वैल्यूइंग ताको हमें को वे रे इन्फॉर्मेशन को वैल्यू दे पारे आउ पर्सनल वैल्यूज हमें केमती हमें को वे ताको बुझिले सेटा भी डिपेंड करे ठीक अछि तापर असला कोन ऑर्गेनाइजेशन structuring the different values and ideas comparing them and creating an internal consistent philosophy ठीक अच्छा एती गला तापर नेक्स्ट होचे हमरा कोन ना कैरेक्टराइजेशन तो कैरेक्टराइजेशन हमरा कोन आसुची ना internalizing the value to the point where they control or guide one's behavior and a personal value system is formed एती हमरा आसुची तो receiving responding valuing organization and characterization ठीक अछि नेक्स्ट साइकोमोटर इट इज अ फिजिकल एक्टिविटीज जोड़ा रहला ताको हमें कोन कहबा ना साइकोमोटर डोमेन ताको हमें इंक्लूड करिया ठीक अछि तो एथरे हमर कोन आसुची फर्स्ट इमिटेशन मैनिपुलेशन प्रिसिशन आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन एती जिंस हमर आसुची ठीक अछि तो इमिटेट माने हमर के देखले हमर एटा कांसेप्ट देखले हमर के आरएच स्टेप देखले हला आरएच स्टेप देखले हमर कोन ना इमिटेशन manipulations, precisions, articulation and naturalizations ठीक अछि imitation माने होचे हमरा कोना आउ जण को इमिटेट करिया को हमरा कोन कहबा imitations that is a copying of action of behavior manipulation माने होचे हमरा कोना performing a skill for a cue or following some instructions पई और precisions माने होचे हमरा कोना executing a skill with accuracy without errors पई तापर असला मतलब articulations coordinating a series of actions पई with speed और ग्रेस पे और को बड़े हमरा एक्यूरेसी रहबा गोटे सब्जेक्ट ले कंटेंट हो केमते हम एक्यूरेसी रे तको हमें माने किछि भी करि पारिया सेटा को हमें बेस करथे को बड़े हमें रिप्रेजेंट करबा माने लेखिया किछि राइटिंग करिया हमें को वे रे तको रिप्रेजेंट करे सेटा को बेस करछ तो नेचुरलाइजेशन हो जगह ना परफॉर्मिंग अ स्किल ऑटोमेटिकली विथ मास्टरी मास्टरी नेचुरलाइज वे रे तब होचा हमर कोन ना फैक्टर्स अफेक्टिंग तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में कौन कौन आछो फर्स्ट टीचर रिलेटेड फैक्टर्स आसीबो फर्स्ट कौन आसीबो हमर सब्जेक्ट नॉलेज गोटे टीचर को कहली सब्जेक्ट नॉलेज निहाती रहबा जरूरी नहले केमति कोन डेलीवर करे लेक्चर्स और जो टीचिंग स्किल्स रहबा दरकार ने को वे रे पढेले ठीक रहले लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी करिया दरकार केमति टेक्निक्स यूज करा दरकार और कम्युनिकेशन यूज करा पर्सनालिटी करा दरकार ना गोटे जने बड़े क्यूरियस में बहुत एंथुसियाज्म हवा दरकार क्यूरियस रहया दरकार कि कुछ वाला जिनस में the enthusiasm, patience rather, confidence and empathy enhance the learning rather. Attitude rather, motivations rather, positive attitude सब बड़े helpful करिया करना वाला लाइफ में किसी achieve करिया को goal हमारा जहाँ भी था समझता हूँ तो commitment inspire the students मन को inspire करी पड़ते हो कि हमती गोटे किसी छोटे big goal achieve करिया पाए life में तो सेया होची बेस कोची communication skills गोटे clear communication skills रहा दरकार understanding of the students response भी बुझे दरकार
और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नेवा दरकार दैट इज अ पेडागोजिकल ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द इंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक अछि तापर आसुची हमर कोन ना लर्नर सेंटर फैक्टर कोन कोन हमर आसुची फर्स्ट होची हमर कोन ना दैट इज अ लर्नर सेंटर्ड रे टीचर सेंटर्ड हमती लर्नर सेंटर्ड फैक्टर रे कोन बेस होची ना इंटेलिजेंट एंड एप्टीट्यूड रहिबो जेमती एठी हमर डिटरमाइन्स द पेस एंड डेप्थ ऑफ द लर्निंग रहे दरकार गोटे स्टूडेंट्स रो इंटरेस्ट रहे दरकार पढ़ा बिना इंटरेस्ट रे के तमे आपण माने जेते फोर्स करियो जने जदी इंटरेस्ट नथियो तो जने पढ़ी पारियो जने लर्न करि पारियो सेते सोले रेडीनेस टू लर्न जने क्यूरियस रहे दरकार ले कोन ना क्यूरियोसिटी जोडा हेल्प करे हम किछि लाइफ रे मोर एंड मोर अचीव करिया पई the engaged learners grasp that is a concept better and attention and concentrations essential for effective understanding readiness and maturities physical emotional mental and preparedness for learning rather learning style केमती होगा दरकार visual auditory और kinesthetic preference affect रहा दरकार हला जने देखि जने पढ़थियो देखिबा सुनिबा like speaking read like ଆମର ଭିଜୁଆଲି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର କଣ ଆମର ଅଡିବଲ କ୍ୟାପାସିଟିସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କାଇନେଥେଷ୍ଟିକ ରହିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଣ ଆମର କନଭର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ ରେ ହଉ କି ତାକୁ ରାଇଟିଂ ରେ ହଉ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର ତାର ହଉଛି ଆମର କଣ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନର କୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଆଉ ଏନଭାରमेंट ବି ସେତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାରमेंट ଥିଲେ କଣ ନା ତାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ अचीव କରିବାକୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଜି ବି ହବ ଯୋଉଟା କି ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସିବଲ ବି ହବ ତାପରେ ଏନଭାରमेंट ଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ तो एथरा हमरा कौन आसुची ना क्लासरूम एनवायरनमेंट तो क्लासरूम एनवायरनमेंट टा क्लीन रहा दरकार वेंटिलेटेड रहा दरकार डिस्ट्रक्शन फ्री स्पेसेस रहा दरकार टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट रे अवेलेबल रहा दरकार दैट इज आईसीटी चार्ट्स मॉडल्स और एनएचएस द लर्निंग स्कूल क्लाइमेट टा सपोर्टिव हवा दरकार पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहले गोटे लोक ऑब्वियसली लर्न करियो तार आहुरी इंटरेस्ट बढ़िबो एनकरेज जे टीचिंग पे ଆଉ administrative support ରହିବା ଦରକାର କଣ ନା cooperation from the principal ମାନେ cooperation କରିବା ଦରକାର colleagues ମାନେ as well as and curriculum ଆଉ time allocations ଆଉ କଣ ନା ମୋର balanced ଆଉ flexible curriculum design ରହିବା ଦରକାର teacher student ratio ଟା smaller classes allow the personal attentions ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିଦବା କିଛିଟା most expected questions ଯାହା ବି ଆସିପାରିବ EMRS ରେ ଦେଖିଦବା କଣ କଣ questions ଅଛି तो फर्स्ट है कौन द एबिलिटी ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टीचिंग एप्टीट्यूड कौन होगा तो फर्स्ट इज कौन द एबिलिटी टू मेमोराइज द फैक्ट्स फॉलोइंग मेमोराइज तो केबे भी होबानी द एबिलिटी टू टीच द इफेक्टिवली इवैल्यूएट लर्निंग एंड एडजस्ट द मेथड्स the ability to deliver the lectures and fluently the ability to complete syllabus on time syllabus on time হবনি कि एटा हबनी कि सीटा हबनी कि एटा हबनी बीटा ही हबो ऑब्वियसली आंसर देछि बी काहे ना टीचिंग एप्टीट्यूड इफेक्टिव रहबा दरकार लर्निंग को इवैल्यूएट कर दो हाउ एडजस्टिव मेथड रहले ऑब्वियसली गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड का बेटर हे परियो सेकंड क्वेश्चंस देखिया कोन देछि ना दो which domain of Bloom's taxonomy focuses on the emotional एबे कहले इमोशनल कोड आसे कॉग्निटिव बिल्कुल हबनी साइकोमोटर हबनी एनालिटिकल आंसर हबो सी अफेक्टिव डोमेन ठीक अछि थर्ड which of the following is not a characteristics of an effective teacher गोटे इफेक्टिव टीचर कोडा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे फ्लेक्सिबिलिटी तो ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल स्टेबिलिटी भी हबो तापर एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एटा भी सब ଭଲ टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स बट अथॉरिटेरियन टा जोड़ा अथॉरिटेरियन एटीट्यूड टा जोड़ा ही होचा हमर कोना which is not a effective good characteristics of a effective teaching ठीक अछि कोटा आंसर ना अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ठीक अछि Number 4. In the process of communication, which element ensures the feedback and two-way interactions? Sender one-way process मतलब लाउचे sender टा तो one-way process ही channel it's a medium noise तो बिल्कुल भी हबनी तो आंसर बी ही हबो रिसीवर ही हबो ठीक अछि तो पांचटा होचे हमर कोना a teacher encourages students to questions discuss and analyze rather than memorize this reflects कौन हमर लेक्चर मेथड रे तो जणको एनालाइज करे कि ठीक हबनी डेमोन्स्ट्रेशन भी नुहे इट्स सब टीचर सेंट्रिक ड्रिल मेथड भी टीचर सेंट्रिक ह्यूरिस्टिक तो हम कोन लर्नर सेंट्रिक मेथड
लर्नर सेंटर्ड। तो ठीक अच्छे जदि भिडियो भल लगा समस्त निहाती भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज ये नेक्स्ट वीडियो देखिए आम कौन ना जहाँ भी कवर अप करिया सब EMRS जहाँ भी सिलेबस अच्छी टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड सब आम कवर अप करिया। रही नमस्कार धन्यवाद।